गुड आफ्टरनून। आप सभी एक्सपेक्टेड का आज के सेशन बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और आज के सेशन को समय से जॉइन किया। कुछ टीचर्स हमें लगातार जॉइन कर रहे हैं, हम कुछ Yes. मिनट का और इंतज़ार करते हैं, फिर हम आज के हमारे एक्सपर्ट के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जॉइन रहिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून अगेन। आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि चैट बॉक्स के थ्रू एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है, आप सब चेक कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए एंड अपने अटेंडेंस को मार्क करें। ये मैंडेटरी है, तो रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि प्लीज़ इस गूगल फॉर्म को फिल करें एंड अपने अटेंडेंस को मार्क करें। एक बार फिल हो जाने के बाद चैट बॉक्स के थ्रू डन में रिस्पॉन्स ज़रूर करें। मैं सभी रिस्पेक्टेड टीचर से रिक्वेस्ट करूँगी, गूगल फॉर्म चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है। आप सब इसे फिल कीजिए एंड अपने अटेंडेंस मार्क करें।
ऐसे गौरव सिंह का रिस्पॉन्स देख पा रही हूँ में। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके रिस्पेक्टेड टीचर से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने गूगल फॉर्म फिल कर लिया है तो एक बार डन में रिस्पॉन्स चैट बॉक्स के थ्रू ज़रूर करें। ओके, मैं चैट बॉक्स के थ्रू देख पा रही हूँ। शिवम सर, लोपामुद्रा मैम, अनु मैम ने भी और चित्रा मैम ने भी फिल कर दिया। थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है, मैं उन टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी, आप भी गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसके थ्रू आप गूगल फॉर्म को फिल करें। यही आपका अटेंडेंस है, इसी के थ्रू अटेंडेंस मार्क होगा। रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूर फिल करें। थैंक यू भावना, गूगल फॉर्म फिल करने के लिए। थैंक यू मनीषा मैम। ओके, थैंक यू स्मृति मैम, गूगल फॉर्म फिल करने के लिए। थैंक यू सो मच सबके रिस्पॉन्स के लिए। थैंक यू सो मच कविता मैम। थैंक यू प्रीति मैम, नीलम मैम, बिंदु मैम। सो जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं उन टीचर्स को भी बताना चाहूँगी, चैट बॉक्स के थ्रू गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है। आप चेक कर सकते हैं, दोबारा शेयर किया जा रहा है। आप गूगल फॉर्म पर क्लिक करते हुए अपने अटेंडेंस को मार्क कीजिए, ये मैंडेटरी है। एंड हम कुछ ही देर में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम। Yes, hello मैम। आई रिक्वेस्ट हमारे यहाँ स्प्रेडशीट हमें दिया गया था, इसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स जी। सीबीए सीबीएल तीन थे, तो मेरा नाम सीबीए में है। सो हैड कंफ्यूजन कि कौन सी मीट में और कौन से के मीट में मुझे ज्वाइन होना है। मैम आप पीआई कोऑर्डिनेटर नहीं है, सीबीए कोऑर्डिनेटर है। हाँ, सीबीए में। ओके, सो इस सेशन में फिर आपका मतलब जुड़ना अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। एक्चुअली उसके लिए आपका अलग डिफरेंट सेशन होगा। सो हमें जो मैसेज दिया दिया गया था, सेकंड का है, थर्ड का है और फोर्थ का है। These 3 days we have the Google Meet. So हाँ, you could just help me out with which one I will have to join. ओके, बेसिकली आज का जो सेशन है बजट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर का सेशन। तो जो अपने स्कूल प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर के रूप में चुने गए हैं, उन टीचर्स के लिए आज का सेशन है। अगर आप सीबीए एल के लिए चुने गए हैं कोऑर्डिनेटर, तो आपका एक डिफरेंट टाइम पे सेशन होगा, डिफरेंट डेट पर। वो इंफॉर्मेशन भी आप सबको शेयर की जाएगी।
Okay, ma'am. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so Thank much, you. ma'am. नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैं केंद्रीय विद्यालय मंगलूर से शिवम शेट्टी बोल रहा हूँ। हाँ मेरा जी जो सर। कोर्स है मैम CBL वाला, वो आज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना मैम? आप सीबीएल के कोऑर्डिनेटर हैं सर? कोऑर्डिनेटर नहीं है मैम, लेकिन उसमें नाम है मेरा 3-4-5 टीचर का जो नाम है CBL में, तो अच्छा। मैं बेसिकली आज प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर्स का सेशन है सर। अगर आपने स्कूल से प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर के चुने गए हैं तो फिर आपके लिए आज का ये सेशन है, आपको रुकना है सेशन में। ठीक एक है। बार आप कंफर्मेशन कर दीजिए अपने स्कूल से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Ma'am, जी, गुड आफ्टरनून भावना मैम। ma'am, just wanted clarification. The circular which we have received says a secondary coordinators please. Okay, Yes. specified CBO or CBL. All of us are sitting here, and then second it was Okay. indicating that second it was indicating Oros and project inclusion teachers will be joining. जी। था and followed by था हमारा लिखा हुआ था मैम। तो आज हम ओके। क्या करें, आज तो हम सारे कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं। अगर हाँ, डेट एंड टाइम कोऑर्डिनेटर्स का सेशन है मैम। एक्चुअली हाँ प्रोजेक्ट जी इंक्लूजन हाँ के बारे में ही बताया जाएगा एंड ये जी सभी टीचर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप अपने स्कूल से right, कोऑर्डिनेटर चुने हैं तो आपके रोल भी बताए जाएंगे कि एज कोऑर्डिनेटर आप जी सबके क्या रोल होंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहना है। तो आज का सेशन सबके ओके लिए है, बट जो हाँ सीबीएल एंड सीबीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगी। उन हाँ सेशंस हाँ के जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सबको पहुंचाए जाएंगे, आप सब तक इन्फॉर्मेशन। मैम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का फिर अलग होगा ना? हाँ, वो डिफरेंट होगा। आज प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बताया जाएगा। वो जी September 4 को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग था सर्कुलर के मुताबिक। ओके, ओके। September 3 ओरल स्कॉलर्स कोऑर्डिनेटर्स थे हाँ, डिफरेंट टीवी टाइप और का। सारे कोऑर्डिनेटर्स थे। So all यस। of us are joining from Bangalore मैम। Okay, ओके, ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम, thank you. थैंक यू। सो मैं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स के थ्रू काफी में रिस्पॉन्स आए हैं। सो काफी टीचर्स ने अपनी अटेंडेंस को मार्क कर है गूगल फॉर्म को फिल करते हुए। अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, अगेन गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जा रहा है, आप उसे फिल करके अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबका आज के सेशन में फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कि आप सभी ने अपना जो महत्वपूर्ण टाइम है, समय है वो दिया और आज के सेशन को ज्वाइन किया। आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन पर बेस्ड है। आज हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है और ये किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन को हम बढ़ावा देते हैं, इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे उनको रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर बच्चों के साथ मैनेज कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आइए मैं आप सबके बीच हमारे जो एक्सपर्ट है प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जोशी मैम, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैम, थैंक यू सो मच, आज सेशन को कंडक्ट कीजिए। जी। Thank you so much, Pooja, for the introduction. So we'll begin the session. So first of all, I welcome you all teachers and coordinators who will be working as coordinators. So I welcome you all and I thank you for giving us this time for this session and kindly be with us till the end of the session so that you will come to know regarding the project inclusion about the program, about your own roles, like how you will be playing the role of a coordinator. आप कैसे ऐसे कोऑर्डिनेटर आप काम करेंगे एंड यू विल हेल्प एंड सपोर्ट द टीचर्स. सो आई जोशी बैरागी, आई एम a psychologist by profession, so I'll be taking care of the session today. So going forward, like what Pooja has mentioned, we will be mainly talking about inclusion and how it will help students, and this program how to help to teach teachers, and how you coordinators will be supporting the teachers to help and ensure that the teacher and we are on the same page, and we are all connected and aligned towards a similar goal, that is implementing inclusive education in our classroom teachers.
So the whole program is starting. So before beginning of the session, I would like to bring notice to certain numbers, to certain statistics of our country. So first, I would like to say that a census in 2007 conduct किया गया था और वहाँ पे 26.8 million children जो कि people living with disabilities है, जो कि consist करता है हमारा 2.21% of population. Moving ahead, when UNESCO conducted a study and in the year 2019, and they have found that currently India is home to 7.8 million children, disabled children under 19 years of age. So you can see, teachers, the number that is so huge. Children with disabilities currently in India, so huge. So moving ahead, when we take one step further and try to understand, हम कैटेगरी में अगर समझना है कि इस डिसेबिलिटी के अंदर क्या क्या कैटेगरीज चिल्ड्रन आते हैं, तो उसमें हम जब देखते हैं तो एक 5 में एक स्टूडेंट, एक बच्चा कोई ना कोई कंडीशन है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हम इसे बोलते हैं वो है, एंड 1 in 5 children has this condition or might have 4 more NDD, जिनमें 2 से भी ज्यादा NDD conditions हो सकते हैं. और उसमें से हम अगर देखें तो इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी 12 में एक बच्चे को ये कंडीशन है. एंड specifically if we see children living with autism spectrum who has autism spectrum disorder, currently there are 1.7 to 2 million children are living in India. So you can see just the huge number of it. And if we see one more step further, we can see जो 5 साल के बच्चे की उम्र के बच्चे हैं उनमें से 3/4 क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पाते हैं. And one of the children with disability we see between the age group of 5 to 19 years, they also do not attend any educational institution. So teachers, here you can see that the right to education is not upheld. Even if children उनका admission मिल भी जाता है स्कूल में, but eventually they drop out while they reach middle school or high school. So you can see the bridge gap that we have. The children living with disability इतना huge number में है और उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो टीचर्स है, जो रिसोर्सेस है, वो बहुत ही कम है. ऐसे बच्चे को हम कैसे मदद करें to reach these million numbers? How can we help to bridge the gap? So saying that NEP, National Education Policy 2020, has promoted inclusive education. So today we're going to talk about the challenges, because we already know the problems. Today we are going to talk about the solution. How can we cater to this millions of children जो gap है उसे हम कैसे fulfill कर सकते हैं with the current structure, with the current service providers. So that is inclusive education. क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है टीचर्स जहाँ पे हम बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ रेगुलर क्लासरूम we can help them to learn. And if we see RWD Act, the year 2016, they have broadened the number of disability. Earlier on, physical disability was considered a disability, but in the year 2016, they have recognized to 21 number of disabilities, broadened number of disabilities. तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है जो NDD केसेस है, जो चिल्ड्रन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, उन्हें भी ये राइट्स एंड बेनिफिट्स मिल पाए. सो RWD Act in the year 2016 brought in the number of disabilities, does immensely help the children. So if we see, if we want to include inclusive education, so what is required? What is required to fill the gap actually? Gap of millions number of students and the service providers. What is required? तो इसमें से सबसे पहला requirement है to have a strong partnership between the teachers and special educators, because teachers, it is important, it is very essential, because you are dealing with students in your classroom, and until and unless आप अगर aware नहीं होते, if you are not sensitized regarding to recognize the signs and symptoms in children living with disabilities, because ये disabilities hidden होती है, तो इसके लिए
we have to have knowledge, we have to have we have to be sensitized. Then only we can recognize the signs and symptoms in children, and then we can also help the special educator to reach out to special educator to give support to these children. So first, as a teacher, we should be aware. Next is having experienced team of experts. So in every school, it is essential that there should be a counselor, there should be a psychologist, there should be a special educator, a basic need. Because all these professionals, they bring their own expertise. They bring their own expertise, their own area of expertise to help these children, support these children. So it is required if there is this collaboration between the experienced team of experts. Next is supporting teachers. So because teachers, if supported, then they will be able to identify, able to recognize the signs and symptoms with children having challenges in their classroom. Next is having such resources which should be accessible to the teachers. So ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, ऐसी कोई प्रोग्राम होने चाहिए जो easily accessible, because throughout we will be needing help, and if this program is accessible, then it will be much help. Next is the program should be multilingual in nature, because teacher, as we know in India, ours is a land of diversity. So in every kilometer, the language changes, the culture changes. So there should be certain programs with resources which should be multilingual in nature. Next is the collaboration of state government engagement, because they are the ones who forms the policies. So until and unless state government are not working hand in hand with teachers to understand challenges that teachers face in local level. So until and unless they are not connected, we will not be able to get the support from the state government for exemptions and benefits for the students. So teachers, the collaboration of state government is utmost essential. Next is having professional courses for upskilling and training the teachers, because in the field of inclusive education, every day there are new research that is coming up. हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें मिलता है, नया रिसर्च किया जाता है. तो अगर ऐसे कोई प्रोग्राम हो जहाँ पे हम टीचर्स को, स्पेशल एजुकेटर को ट्रेन कर पाए, ताकि वो अपने स्किल उसे और बेहतर कर पाए, ताकि ऐसे बच्चे को हम हमारे क्लासरूम में पहचान सके और हेल्प के लिए हम सपोर्ट मांग सके. So that is very essential to upskill yourself. Next is need of strong and increased parental participation, because at the end of the day, the children spend most of the time of the day at home. So until and unless parents are not aware कि वो बच्चे के जो डिसेबिलिटी जिसे है, उनके जो challenges होते हैं, अगर parents वो ना समझ पाए, तो there will be a gap in providing help. So once they are also aware, parents भी aware होते हैं, challenges समझते हैं जो disabled बच्चे हैं उनके, then we as a teacher and parents can work hand in hand. So these are the elements that is required for millions of students right now. So moving ahead, so I would like to say, I'm very glad to say, Project Inclusion Program, it was launched in the year 2016 by Sri Aurobindo Society. It was an initiative of to create inclusive learning environment. So teachers, we first started our on-ground training in the district of Ghaziabad. हम ऑनलाइन ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग करते थे. पहले हम फिजिकली ट्रेन करते थे टीचर्स को, और ये गाजियाबाद से शुरू हुआ था. तो प्रोग्राम वेंट ऑन फॉर 4 days where we sensitized, we kept workshop regarding the inclusive education, regarding the hidden disability, children with neurodevelopmental disorders, उनके conditions क्या होते हैं, signs and symptoms क्या होते हैं, इन सभी रिगार्डिंग हमने ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग रखी थी, जहाँ पे हम फिजिकली जाके टीचर्स को ट्रेन करते थे. So before the training, the teachers were not aware, and they were telling us that we don't have such kind of cases in our classroom. We don't have such kind of children in our classroom. But teachers, it was very amazing to see when we oriented more than 20,000 number of teachers, and those teachers who were saying that they don't think they have any disabled children in their classroom, they only could recognize probable cases of IDD of 18,000 number of students. They provided us a case, which they wanted to be children having some kind of condition, neurodevelopmental disorder.
So teachers, when a team of experts or clinical psychologists, they performed the psychometric assessment, they could found a confirmed case of 6,600 number of confirmed cases. So teachers, हमें क्या समझ में आता है कि until and unless we are not sensitized, हमें वो awareness नहीं मिलती, we will not be able to recognize the hidden disability, because the signs and symptoms, it cannot be seen with our naked eye. So once we are aware, we have gained the knowledge. It was possible that the teacher could give us this many number of cases because they were sensitized and they were given the awareness. So the sensitization and training is very, very important to recognize the signs. So teachers, after that, we are present in the 14 states and union territories. But during the 2020, what happened was, all know the corona outbreak, the pandemic outbreak. So we could not give the on-ground training. हम physically train नहीं कर पा रहे थे. But हमने काम बंद नहीं किया teachers. What we did was shifted to digitalized platform. हमने पूरा प्रोग्राम को एक ऐप के जरिए हमने डिजिटलाइज कर दिया. तो इसमें हम देख पा रहे थे कि मोर कॉस्ट इफेक्टिव, टीचर अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से कोर्स को कर पा रहे थे, ज्वाइन कर पा रहे थे, एंड वी कुड रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री. सो इट वाज अ मेजर डील बीइंग डिजिटलाइज्ड. सो हमने जब इसको ऐप में कन्वर्ट किया, इस पूरे प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट इंक्लूजन का, तब हम इन्हें 3 फेजों में हमने बांटा है. So the first phase is just regarding the sensitization and training, where we provide the course for learning about the conditions of children with disabilities, their signs and symptoms, how they behave, their behavioral things, and also the classroom management, how to manage those children in our classroom, the exemptions and benefits provided by the state government. All these things we have sensitized throughout in the phase 1. So moving on to phase 2. Phase 2 is regarding the screening of the students. एक बार हमने ज्ञान हासिल कर लिया कि ऐसे बच्चों की जो साइंस सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होती है, एंड देन वहीं पे नहीं होता ये कोर्स. वी गो वन स्टेप फर्दर, एंड इन द फेज 2 वी स्क्रीन स्टूडेंट्स. हम पहचानते हैं किसके जरिए, एक स्क्रीनिंग के जरिए, जो कि ऐप में ही उपलब्ध है. यहाँ पे 3 फॉर्म्स के जरिए हम बच्चे को स्क्रीन करते हैं कि बच्चे को वो कोई डिसेबिलिटी के अंडर डोमेन में कोई चैलेंजेस फेस करता है कि नहीं बच्चा, तो हम स्क्रीन करते हैं. एंड आफ्टर थ्रू द स्क्रीनिंग, व्हाटएवर डेटा वी पुट इन द ऐप रिगार्डिंग द चिल्ड्रन दैट वी डाउट ऑन, कि इस बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है. सो वंस वी डू द स्क्रीनिंग, ये क्या करता है ऐप, ऑटोमेटिकली हमें जो बच्चे की जो दुविधाएं निकल के आई है, जो डोमेन सेलेक्टेड हुई है, उसके रिगार्डिंग हमारा फेस डिजाइन किया गया है, which is of intervention. This is the final phase where we provide the intervention plan to the teacher, where they can access जो भी कंसर्न निकल आई है बच्चे की स्क्रीनिंग में, फेज 2 में, उसी के बेस कर हम फेज 3 को डिजाइन करके इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे टीचर बच्चे को through this intervention plan, whatever the steps are given in the plan, through that the teachers can help the students, support the students, so that उनकी जो खामियां हैं, वो जहाँ पे लैग बिहाइंड करते हैं, वो सब हम बच्चों को हेल्प कर पाए, ताकि वो डेवलप कर पाए अपने आप को और वो इम्प्रूव. टीचर्स, दिस होल फेज is divided into 3 phases. So we will be talking very broadly about all phases. So moving ahead, we talk phase 1, that is sensitization and awareness. So teachers talk about the phase 1. एक course के द्वारा हम देते हैं in the app. It's called Learning Difficulties Understanding and Management Level 1. So the whole course contains teachers included of 17 modules, which are of audio-visual in nature. Videos है, जो animated videos है, in each chapter 17 modules में chapters होंगे, उनमें chapter 4 से 5 animated videos होंगे, कि बहुत creative, short and बहुत interactive, easy to understand, and there are also reading material. Teachers who would like to read during their free time while traveling, they can do that. And it is available in 8 languages currently, and we are still working on to develop in 5 more languages, so that we don't want language as a barrier. So it is available in multilingual. So the course content consists of the conditions of NDD, that is neurodevelopmental disorders, such as
autism spectrum, specific learning disability, and so on. And also the classroom management, the exemptions and benefits from policies from the government, all these things are covered in the course. And each module that I would like to say, each module, after completing each module, there will be a short assessment based on your understanding of the course that you have completed. So after completion of 17 modules, there will also be an embedded assessment. So as I said, it is audiovisual in nature. The videos are very engaging, and of course, at the end of the course, to recognize your effort teacher, we have also kept the certificate program based on the assessment. So teachers, if you just invest, I would like to invest your half an hour daily, you can finish the course within 8 to 10 days. It will not take much time. And as I said, there are reading material. If you like to read, you can read. I always watch. You can just watch the video and complete the course in 8 to 10 days. Then you can move to next phases. So moving ahead. So this is the course that I'm talking about. The first course, that is the Learning Disabilities, Understanding and Management Level 1. So once you click on the launch on your app, Project Inclusion app, you will be able to access the course, all the modules of the course. Then you can finish the course very soon. Moving ahead, I would like to show you how the animated videos will be in our course. So teachers, kindly pay attention. I will be playing the video of the animated video of the course. Dyslexia, understanding the disorder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Zoya, she's 6 years old, and this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds to words. Since she cannot pronounce the words, recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision, they are just as smart as their peers. They struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is the blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. Teachers, this is how the videos will be. It is how you can see it is animated, and it is very short and interactive and creative, and you can finish it within 10 days. The course. And this is the reading material that I was talking about. The side you can see module 1 chapter 1 inclusive education. This is how the chapters will be and the videos will be. So you can finish the course very soon. So moving ahead. So teachers, the efforts that you will be paying to learn the course. So to recognize your effort, we are keeping a certificate programs.
So teachers, after completing each module, an e-certificate will be generated if you score more than 50%. And teachers who are able to score 60 to 75% will receive a course completion certificate after the end of all the modules, 17 modules. So teachers who are able to score more than 75% will receive a special recognition certificate that is called Achievers E-Certificate. So this is how the certificate looks like. This is a thing of module completion certificates. This is how the certificate will be provided. You can download the certificate and also share it within your community. So your efforts will be recognized. So moving ahead, teachers, we will be now talking about phase 2. That is the next phase. After हमने जो phase 1 में हमने जो training हासिल कर ली है, जो sensitized हो गए हैं, उसके बाद हमने जो knowledge हासिल की है, उस पे काम पे कैसे लगाना है. So identification is all about that, which is on the based on screening. कि हम बच्चे को screen करेंगे कि बच्चे को कोई दुविधा है भी कि नहीं. So screening में teachers हम 3 forms के जरिए बच्चे के जो information है, so we will fill 3 forms based on the information, based on the observation. क्योंकि अभी काफी हो सकता है काफी वक्त हो गया है, आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है बच्चे को कि बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत तो है ही, तो आप श्योर हो जाते हैं, देन यू फिल द स्क्रीनिंग. इससे क्या होगा टीचर, ये रूल आउट हो जाएगा कि बच्चे को कोई दिक्कत है भी कि. सो व्हेन यू फिल स्क्रीनिंग वो टीचर, इट विल हेल्प. तो आप सबमिट क्लिक कर देंगे, बच्चों को रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें फिल करके आप सबमिट कर देंगे. ये फर्स्ट स्क्रीनिंग 1 को क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट देगा कि इट विल रूल आउट कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है भी कि. अगर है तो कौन सा डोमेन में है, कौन सा डिसेबिलिटी के अंदर उसको अफेक्टेड है बच्चा. तो स्क्रीनिंग 1 हमें वो रिजल्ट देगा. So moving on to second form, that is profiler. So profiler teacher, once you fill the information regarding the children, so it will help identify बच्चों की जो strength, उनकी जो खूबियां है, उनकी जो ताकत है वो क्या है. हमें हमेशा लगता है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनमें हमेशा हमें कोई ना कोई कामयाब फॉल्स दिखाई देती है, बट टीचर्स ऐसा नहीं है. हर बच्चा यूनिक होता है और हर बच्चे में ही कोई ना कोई छिपी हुई उनकी ताकत होती है, उनकी स्पेशलिटी होती है. प्रोफाइल विल हेल्प अस आइडेंटिफाई कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है. नॉट ओनली दिस, इट विल हेल्प आइडेंटिफाई बच्चों की टेम्परामेंट क्या है, उनका बिहेवियर्स क्या है. ये सारे चीज हमारे प्रोफाइलर में आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम. सो टीचर, द फाइनल फॉर्म इज एडवांस स्क्रीनिंग. So teacher, only when you fill the advanced screening, then only it will be considered that the screening is done. If you are filling only one form, the screening will be incomplete. So आपको 3 ही फॉर्म्स भरने होंगे ताकि बच्चों के हम जो हमें दुविधाएं है, जो कंसर्न है वो उभर कर आए. तो एडवांस स्क्रीनिंग में जब आप स्टेटमेंट्स को आप इंफॉर्मेशन भरेंगे बच्चों के रिगार्डिंग, ये हमें डोमेन आइडेंटिफाइड हुआ है. सपोज इफ द चाइल्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड हैविंग द एकेडमिक कंसर्न इन एकेडमिक वेयर, so advanced screening help us identify in academic child is facing concern in reading or writing or mathematics. So all this subdomain will be identified, and along with subdomain क्या concern है specific. अगर बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है तो क्या कंसर्न है, बच्चा पढ़ नहीं पाता या पढ़ पाता है, they cannot form the letters, they cannot join the words with the sound. What is the specific concern in that subdomain? That also will be identified through the advanced screening. So teachers, when you finish all these 3 forms, the screening can be considered complete. So teachers, moving ahead, now screening is divided into class specific. It is not age specific because many students with different age groups are might be studying in different classes. So first screening जो specific हमारा divide है वो है foundation, where class 1 and 2 you can fill the screening and foundation better. In preparatory is considered from 3 to 4 standard, middle is considered from 6 to 8 standard, and second 9 to 12 standard. तो ये 4 भागों में हमारा जो screening है वो class basic में divide किया गया है. So moving ahead, this is how the screening 1 will look like teacher in exam. जब आप बच्चे का स्क्रीनिंग शुरू करेंगे तो ये स्क्रीनिंग 1 को आप भरेंगे तो ये कुछ तरह इस तरह से आपका स्टेट दिखाई देगा along with some option of yes or no. So based on your observation, आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर ली है, अपने पेरेंट्स से अभी उनका इंफॉर्मेशन ले लिया है बच्चों का, then will be able to fill the screening कि बच्चे को ये कंसर्न है क्या नहीं.
तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे. यू हैव टू फिल वन एवरी स्टेटमेंट, यू कैन नॉट स्किप वन स्टेटमेंट आल्सो. सो इस तरीके से आपको पूरा स्क्रीनिंग 1 कंप्लीट करना है. Moving ahead, this is actually the sample of how the report will look like, teacher. Once you have finished the screening, that is screening 1, profiler and advanced screening. So the first picture shows the basic profile of the child. So once you have created the profile, done the screening, this is how the profile will look like. So it is showing screening 1, and with beside that it is view report. You can view the report. The report will always be saved there. You can view the profiler, and below you can see there are some personal details of the child, which is a basic profile of the child. नेक्स्ट द स्क्रीनिंग रिपोर्ट. इस स्क्रीनिंग में कौन सा डोमेन आइडेंटिफाइड हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एकेडमिक डोमेन आइडेंटिफाइड हुआ है. मूविंग टू प्रोफाइलर एंड एडवांस स्क्रीनिंग की बच्चे को क्या दिक्कत आती है. ये जो फाइनल रिजल्ट का सैंपल का स्क्रीनशॉट है, ये है हमारा फाइनल एडवांस स्क्रीनिंग का हमारा रिपोर्ट है. तो यहाँ पे बच्चे के सब में कौन से कंसर्न है वो उभर कर आई है. ये सारे कंसर्न में सारे कंसर्न्स को ऊपर बेस कर हमारा जो इंटरवेंशन है, इन बिलो यू कैन सी देयर इज दिस इंटरवेंशन रिटन. सो बेस्ड ऑन द कंसर्न्स दैट इज you have identified, and based on the result of the advanced screening, the intervention plan will be that, teacher. So once you click intervention, you can get the access to view the intervention plan and work with the child. So teacher, only when you work with the child, then only हमारा ये जो मकसद है, ये जो गोल है कि हम बच्चे को सही में मदद कर पा रहे हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं हम इसको एड्रेस कर पा रहे हैं, वो आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट टीचर, आंसर फाइनल इज दैट इज कॉल्ड द इंटरवेंशन. कि हम इंटरवेंशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, हाउ टू एक्सेस दैट. सो द होल फेज ऑफ इंटरवेंशन टीचर्स will be doing an orientation for phase 3, like we have done in the phase 1 and phase 2, for teachers who have submitted the case studies. एक बार आपने केस स्टडी भर ली है, फेज 2 में जो स्क्रीनिंग है वो कंप्लीट कर लिया है, तभी आप फेज 3 में एक्सेस कर पाएंगे. So teacher, once you have identified the subdomains and the concerns of the child, you can choose. You might have done there might be 8 to 10 students or 1 to 5 students there in your class who might be having some concern. वो कंसर्न जोड़ कर आई है. एक टाइम आप एक ही बच्चे के साथ काम कर सकते हैं. You can choose to work with one child. So when you choose to work, the whole intervention plan will be provided to you in the app itself. तो वो इंटरवेंशन प्लान को आप एक्सेस कर पाएंगे and you can start working with the child. Not only this, teacher, this whole journey of intervention, our mentor or special educator will be mapped with you, teacher, so that we keep weekly meetings for you to know your progress, कि बच्चे के साथ आप कैसे काम कर पा रहे हैं. जो इंटरवेंशन प्लान प्रोवाइड की गई है दैट, is it really working with the child, or you want more help, more support, or also you can inform us after 3 to 6 months अब आपने काम कर लिया, because it will require time to bring change in these children. Once you have identified the concerns और आप intervention plan को access करके काम करना शुरू करेंगे, तो 3 से 6 महीना लग जाता है बच्चे में सुधार आने के लिए. So in that time frame, you can see the changes. When you start seeing the changes, document the change, teacher. You can document the changes. आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो के फॉर्मेट या फोटोग्राफ्स के फॉर्मेट में, कि बच्चे का काम आपने फोटोग्राफ किया है, आपने वीडियो किया है कि बच्चा कैसा था पहले फॉर द intervention, provision of intervention, and after you have supported the child with the intervention plan, उसमें क्या बदलाव आई है, कितने बदलाव आए हैं. So with this teachers, and you will provide us, will share the community, so that और भी टीचर्स जो दूसरे रीजन में शायद है, उनकी क्लासरूम में बच्चे हैं, शायद इसी तरह के सेम वो कंसर्न हो, और आपसे वो उन मोटिवेशन पाएगा कि बच्चे सच्ची में हम सुधार ला पाएंगे और कैसे काम करना है. They will be able to relate to you. So teacher, intervention is the main हमारा जो काम है, जो गोल है. So moving ahead, this is the intervention plan look like the app, teachers. So here we can see, देख पा रहे कि बच्चे का reading domain identify हुआ है, so that we can see their concern कि बच्चे का concern है, बच्चे को reversal problem है. तो यहाँ पे नीचे ही हम read plan देख सकते हैं. Once you click read plan, आप जब ये read plan में क्लिक कर देंगे कि ये concern regarding ये प्लान दिया गया है, जब आप प्लान पे क्लिक करेंगे आपका ये पूरा इंटरवेंशन प्लान आपके पास मिल जाएगा, where there are 4 steps. First is the concern,
कि what is the child facing challenges, concern. Next is the goal, कि हम बच्चे में क्या goal हासिल करना चाहते हैं regarding the concern. And regarding the accommodations is given, the flexibility will be adopted in your classroom. आपको curriculum है उसको कुछ सुधार या फिर कुछ बदलाव लाकर आप बच्चे को accommodate कर रहे हैं अपने classroom में, so that you are able to teach the child also, teach the special child along with the regular school students. तो टाइम फ्रेम में कोई करिकुलम में ऐसे कोई बदलाव ला सकते हैं with some accommodations. And after that there will be steps, the step to step how to teach the strategy to the child, कि हम जो कंसर्न है इसको सुधार लाने में क्या क्या स्ट्रेटजीज है वो पूरा स्टेप टू स्टेप आपको मिलेगा टीचर्स. And if you just invest 5-10 minutes of your day by implementing this intervention plan with the child in your classroom along with other students also, then you can definitely see the change. And once you see the change, अगर 3 से 6 महीना हो गया है आपको चेंज दिख रही है, you can mark the levels. Marking कैसे करना है? Level 1, level 2, level 1 teacher you mark when you have seen at least some changes in the child, कि कुछ physical हेल्प करके फिजिकल प्रॉम्प्ट और वर्बल प्रॉम्प्ट बोलकर बच्चे को थोड़ा सा छू कर अगर बच्चा पढ़ पा रहा है लिख पा रहा है, देन यू कैन मार्क दैट यू हैव अचीव्ड एटलीस्ट 40% ऑफ changes in the and you can mark level 1. If you see changes is more कि बच्चे को सिर्फ वर्बल आप बोल के बच्चे को काम करा पा रहे हैं, then you can mark the level 2 and you can mark the level 3 after you're sure that you have achieved 80%. जहाँ पे बच्चे को कोई क्यू की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है. क्यूज यू कैन गिव डेफिनेटली बट नो प्रॉम्प्ट्स, कि उसे ना छूकर ना बोलकर बच्चा अकेला ही काम कर पा रहा है इन द क्लास. देन टीचर्स यू कैन मार्क दैट यू हैव अचीव्ड level 3 success with the child. So teachers, this is what the intervention will look like. Moving ahead, teachers, you can now, after you have completed the screening and done the implementation, then you can move to other program. Others in our program, that is process of learning. There will be reading, writing, math की वजह से कोई strategies दिए जाएंगे जो general strategies है, which you can implement with other regular students also. But this course आप तभी access कर पाएंगे when you have completed the first course, that is learning difficulties, understanding and management level 1, जहाँ पे 17 मॉड्यूल वाले कोर्स होंगे. एंड आपको स्क्रीनिंग भी कर ली है, आपने केस स्टडी भी सबमिट कर दिया है, देन यू कैन एक्सेस द अदर कोर्सेस. So moving ahead, I'll be showing you how the other course will look like and the program will look like. Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how strategies can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning, and in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for some children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and math, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which
It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is book. Again, the temporal lobes, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. So teachers, this is how the video will be there in the other courses. So moving ahead. सो टीचर आपकी जर्नी रहेगी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ कुछ ऐसी रहेगी कि फर्स्ट यू हैव डन द कोर्स एंड in the course you have been sensitized, you have been aware regarding learning the signs and symptoms of children with disability. Then you will move on phase 2. आप screening, यहाँ पे screening रहेंगे, you will be identifying the limitations and the challenges in the child. Along with that, with the profiler, you will be identifying the strength and the interest of the child. And also through the advanced screening, you will be understanding and get a deeper understanding of the subdomains of the affected subdomains of the child. Not only that, you will be able to adopt the child in the intervention phase. Adoption is not physical adoption, teachers, but choosing to work with the child, because only then our goal will be fulfilled. जब आप बच्चों के साथ intervention पे काम करेंगे on to help the achieve and also support the target that the child has. If you are able to and the child to build the skills. So teachers, the work that you will be doing throughout the phases, जब आप कोर्स करेंगे, स्क्रीन करेंगे, बच्चे के साथ इंटरवेंशन पे काम करेंगे, so teachers, all these things will be documented already in the app. So teachers, आपके जो efforts रहेंगे, that will be publicized in the national and international platform, teachers. Not only this, through your success story, the other teachers in other regions of the country, and you will be a torchbearer of success to lead and inspire others and to bring a change in the children with disabilities. So teacher, it gives me immense pleasure to say that now we have been able to orient more than 3 lakhs of teachers for the Project Inclusion program. And more than 13 lakhs teachers have already registered in the app, teachers. And with the 32 states MOU have been signed, and we are working with the program throughout the country, teachers. So teachers, not only this, हम यहाँ पे आपको नहीं छोड़ेंगे, पर आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे रिगार्डिंग एनी फेज. कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी फेज में, सपोज आप कोर्स सीख रहे हैं, फेज 1 में कुछ दिक्कत आती है कुछ समझने में, आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वहां पे कुछ दिक्कत आती है कि हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट द 3 फॉर्म्स एंड थिंक अबाउट दैट. एंड आल्सो रिगार्डिंग द थर्ड फेज ऑफ इंटरवेंशन, कोई भी फेज में आपको कोई प्रॉब्लम हो, you can get connected with us by joining the doubt clearing session, which is kept to Monday to Friday at 4 p.m. every day. So here our psychologists, clinical psychologists, special educator, and IT team, all the experts will be joining here to help you, to support you. कोई question हो, कोई भी आप queries हो, you want to get more information, more understanding, you can join in the doubt clearing session. And regarding any app, course, कोई भी दिक्कत हो, आप पे join करके आपका concern है address कर सकते हैं. Not only this, teachers, you also say here your success story. You can share here your success stories कि आपने कैसे बच्चों के साथ काम किया, क्या प्रोग्रेस मिला बच्चों के साथ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स ला पाए, ताकि जो और भी टीचर्स यहाँ पे जुड़ेंगे भी आपसे सीख, आपसे पाए. तो टीचर्स, in this way our whole community will be there, will be built up, and आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ कैन वी इम्प्रूव द कोर्स में, हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्क्रीनिंग में भी. So all this, regarding all these things, you get total clarity of the course. So the doubt clearing session will be there.
So moving on to say the benefits of the project inclusion. So first, in all teachers, it is a comprehensive teacher training where we are there to continuous support and build the capacity of the teachers to learn new things, to have the knowledge, to be sensitized and aware, so that teachers, you are able to identify students with disabilities in the classroom. Not only this, with this program, we are including the geographical inclusivity, because the PI program is reaching beyond boundaries and it is accessible to teachers and students. Even we are reaching to the remotest of places to provide our support. And along with this, education officer को भी हम audit करते हैं, because to understand the challenges of the teachers that you face in the local level, it's very important for them also to understand, so that they can also provide that environment where ताकि हम inclusion को और भी foster कर पाए in the admin level. Not only this, teacher training will be there, school teachers, all primary and upper primary teacher will be oriented to help identify कि वो train हो जाए ताकि अपने classroom पे या कोई भी classroom पे वो identify कर पाए ऐसे बच्चे को जिनको दिक्कत होती है and उनको support भी कर पाए. And also this for training for special educators are given, because for special educators, as their expertise in one area, with this program they can get their expertise in many areas. It is cross disability, so their own learning needs are being fulfilled. Next is the parental participation, where parents will be educated to create the supportive environment, ताकि बच्चे को जो challenges है वो parents समझ पाए और उनको support कर पाए. And along with this, there are personalized intervention. जो भी आप case study भरेंगे in the screening, you will get a personalized intervention plan for the child, कि आप उस particular बच्चे के साथ क्या plan के साथ आप काम करेंगे और आपको success जरूर मिलेगी. And with this, end-to-end systematic change will be there, because the program, the team of specialized resources with regular teachers, impacting parents, students, also reinforcing the zero rejection policy. कि हम कोई भी बच्चे को without help नहीं छोड़ेंगे, हम सारे बच्चे को एक साथ include करके classroom पे हम आएंगे. And with this, automatically the inclusion, the social inclusion, will be promoting that in a classroom where all students are learning and they feel accepted and valued. So these are the benefits of the program, teachers. So now moving ahead, your role teachers, now I will be explaining the role of yours, who you will be working as the coordinator for this program. So first foremost, teachers as a coordinator that will be working, the first thing is you will ensure the teachers' participation. This 100% teachers' participation, 100% implementation of this project inclusion program. Because if participation is not there, if we are not starting with that, we will not reach our goal to help the children with disability. So participate करना, जैसे कि आप सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि सारे टीचर्स ने ये ऐप डाउनलोड कर ली है, क्योंकि प्रोजेक्ट इंक्लूजन नॉट ओनली डाउनलोड, help them to register in the app. कुछ basic details भरने होंगे. You have to help the teachers to register and enroll in the program. So once they have registered, they can launch the course and then start the course. So we can finish the phase 1 first, phase 2 की disability के regarding वो 8 से 10 दिन में ही वो complete कर सकते हैं. So once you convey this, the teacher will be comfortable that they can finish the course 8 to 10 days. If they can just invest half an hour daily. So teacher, as a coordinator, you will be the bridge of the gap. You will bridge the gap. You will be the bridge between us and the teachers. It could be information that we have, we want to provide. You will pass it on to the teachers, and teachers that are facing problems maybe in the ground level, you will be able to communicate us teachers की जो needs है, उनके कुछ concerns है वो आप हमसे पहुंचाएंगे as a coordinator. So you will be the medium where teachers will be going to you and we will also be connected with you. So after they have finished the phase 1, and you will also ensure that they have started the phase 2, जहाँ पे कोर्स करने के बाद ही नहीं वो खत्म होता. phase 2 बहुत जरूरी है हर phase में. तो phase 2 में उनको स्क्रीनिंग कैसे करनी है, स्क्रीन फॉर्म्स कैसे भरने हैं, ताकि वो बच्चे को आइडेंटिफाई कर तो बच्चे उनके क्लास में कैसे उनके जो नीड है उनको आइडेंटिफाई कर पाए. तो phase 2 का स्क्रीनिंग ensure that it is very important. And also after they have the screening, it is very important to implement the intervention by attending the phase 3 session after they have completed the phase 2. Then the importance of monitoring, you have to completely
monitor की teachers how they are progressing with the phases. Phase 1 कब करना है, अब phase 2 क्या दिक्कत आ रही है, phase 2 अगर कर लिया है तो phase 3 में वो कैसे implement कर सकते हैं प्रोग्राम को, intervention plan दिया गया है in that. You can help them to do a video of the child and send us the success stories or send us any constructive feedback that they might have for us. So आप encourage करेंगे teachers को ताकि वो उनको कोई भी doubt हो, encourage them to join doubt clearing sessions that we have kept every day 4 p.m. deeper understanding of the practices in the classroom. So teachers, you will also help them कि जो success story भेजेंगे कि वो share भी होंगे पर वो publicize भी होंगे. So it is very essential to document the progress. नहीं तो पता नहीं चलेगा. So you will offer guidance and support to the teachers regarding the whole of the phases to the teachers teach as a coordinator. So you share the details as required by our program, as required by Project Inclusion. You will share the details with them. Also communicate any support, technical support that teachers may require. So you as a coordinator will stand as a mediator to answer the challenges that the teachers are facing in the classes in the schools, and once they have on with the program, and also get back to us if you need any kind of support. So teachers, with this I would like to say this is the scan code. You can scan the code and join. You'll be able to join in the WhatsApp support group, which is of the coordinators of the Bangalore region. So kindly you can directly scan and directly join the WhatsApp group. तो ये ग्रुप में जो भी information होंगी, जो update होंगी, you will get in this WhatsApp group, teacher. So I would request you all to scan this code and join the WhatsApp group. So whatever information will be there, the update will be there, will be providing here as Project Inclusion team. And you as a coordinator, आप जो यहाँ पे जो information मिलेंगी, आप इस information को teachers के साथ share कर सकते हैं. तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे through this course. So kindly scan and join the WhatsApp group. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. From when we have to start all this work, madam, because already data has been entered by the school for each and every class. That file updation. Now, afterwards, when we have to start that screening? Yes, ma'am. As ma'am, you will be working as the coordinator. This is the WhatsApp group of the coordinator. So you can join this. So you'll get every information. And if teachers in class or teachers in a school have already done the course, ensure them get done the screening, that is phase 2, and also to move forward to phase intervention. So moving ahead, this is the WhatsApp support group number, teachers. So आपको कोई भी concern हो, our team will be available from 9 to 5 p.m. every Monday to Friday. They will be able to cater to your needs. We need हो, message कर सकते हैं in the WhatsApp. This is a WhatsApp support group number, and this is the mail ID where you can also send your success stories in this mail ID, or any concern that you have regarding the app, technical problems or anything, you can get it with us through this WhatsApp support group number or phone. Please send the WhatsApp number in the message group because it's not visible. Screen is not visible. Screen is not visible. Okay. Ask my team members to send it. Yeah. Is it visible now? Can any of the teachers come? Sorry, ma'am, it disconnected. I was asking that whether we have to start screening from when, which date we have to start. Once teachers have finished the first course, phase 1, they can start with the screening. There's no date for that.
But if they have identified children in their classroom having some difficulties, they can start with the screening, ma'am. So first of all, we have to finish the course, madam, in Yes, project. yes. Only after that. It is available in Diksha app, madam. No. It is called Project Inclusion app, ma'am. Okay, in ये that एक app अलग ऐप है. itself we have to Yeah, in start. the app itself there is this course. Okay, so once After you finishing download, that course, yes, after finishing the 17 modules of course, then you will be able to access the screening phase 2. okay. Then each and every class teacher has to finish that, madam. Yes, ma'am, because only then तो बच्चे को हम screen कर पाएंगे, and only then we will be able to help and provide the intervention, ma'am. It is Okay. required for each and everyone to complete the course and to start the screening, ma'am. And when it will be the last date to finish that course? Sorry, ma'am. To finish that course, what is the deadline, ma'am? अब तक लाइन तो वैसा नहीं है, पर once teachers I would like to say within 8 to 10 days वो कोर्स को खत्म कर सकते हैं. Okay. Okay, if they just invest half an hour, या फिर 5 दिन में भी complete कर सकते हैं. If they are more enthusiastic, they can invest 1 to 2 hours daily, they can finish the course in 5 to 6 days, or not 8 to 10 days, ma'am. And soon after Okay, that ma'am. they can start training, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hello. Yes, good afternoon, ma'am. We had already done the 17 months last year. Okay. So now you can move with the screening, ma'am. That is phase 2. Okay, moving ahead, I would like to say this is the code that you can directly scan and download the Project Inclusion app. You can download it from the Play Store also. तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं. Sorry, ma'am. Still the screen is not visible to me. It is visible to others, ma'am. I will provide the WhatsApp number, group number, support number Yes, in the ma'am. Yes, chat ma'am. box. My team will provide that. Okay, ma'am. You can check the chat box. Okay, so thank you all teachers. Now we have come to the end of the program, and I thank you all for giving us your time today. And now is the time that you can raise your concerns. अगर आपको कोई भी doubt हो, आप पूछ सकते हैं teachers. You can unmute yourself and share anything or doubt that you might have. So, ma'am, I have provided the WhatsApp support number in the chat box. You can check. Okay, thank you so much, ma'am. You're welcome. Yes, teacher. If you have any queries, you can ask. Any doubts? This is the QR code. Teacher who are asking to download the app. This is the QR code. या फिर आप Play Store से भी download कर सकते हैं. Project Inclusion के नाम पे. And my teammates have also provided the link in the chat box
जो डाउट क्लियरिंग सेशन है उनके लिए लिंक है वो आप कनेक्ट हो सकते हैं, उस लिंक सेव कर लीजिए। एंड आल्सो वेब लिंक इज प्रोवाइडेड फॉर iOS यूजर्स इन द चैट बॉक्स टू। Teachers, if you have any questions, you can ask. Ma'am, first of all, which course I have to enroll? Project inclusion, ma'am. The first No, course, I have. ma'am. Learning and understanding management course 1. Yes, learning difficulties, Yes, yes, understanding yes, management yes, level. ma'am. That is the That first only course. I have to do, madam. And then Yes. process of learning. No, first you have to do that course, ma'am. Okay, उस course में आप 70 modules रहेगी. After finishing 70 modules, you do the screening, ma'am. Screening of children. Then you have to do the intervention plan. Then only you do the second course. Okay, okay. Thank you. आपको पहले पहला course करना है. ठीक. Ma'am. Yes, teachers, any questions? मैम आवाज नहीं आ रही है. So thank you teachers for joining with us today and हमारे लिए पूरे बने रहने के लिए पूरे कोर्स में जो भी आपने टाइम दिया है. और मैं आशा करती हूँ कि ये जो व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप नंबर है वो भी आपने सेव कर लिया है. एंड ये जो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है जो कि कोऑर्डिनेटर का एक ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लिया है आपने, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो आई थैंक यू ऑल टीचर्स. इफ टीचर्स यू हैव नो क्वेश्चंस देन यू कैन आप सेशन को लीव कर सकते हैं. So thank you all, teacher. And if you have any questions, you can say. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Screening we have to do for each child, means some special children only. Ma'am, if you can feel that in your classroom there are around 3 to 5 students who are facing some challenges, it will more than that, more than 10,
इज नो ऐसा कोई नंबर नहीं है, पर सारे बच्चों का sorry ma'am, if you have any doubt on any children you can do, ma'am. So there is Okay. no limitations that only one student you do, and there is no compulsory 50 children you need to do. Or it's not like that. If you feel and if you have doubt ki 5 to 10 students have some difficulty in your class, then you can definitely do this, ma'am. Okay, ma'am. Thank so you. that they will be identified. Otherwise, they will Okay. be not be identified. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. Ma'am, this is Yes, it ma'am. is it only through the app that it can be done? Yes, ma'am. In the app there is this course, ma'am. To access the course, do your course. After the course, do the screening. Yes, screening. And after the screening, intervention plan is also provided, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Any time limit for this? Ma'am, you can finish the course in 8 to 10 days if you can just invest maybe half an hour daily. So it's a very brief course, so you can finish it now in 8 to 10 days. No, ma'am. After course, screening is there, intervention is there. Also, any time limit? Ma'am, it's better if you can do the screening after you have done the course, because it will help also to retain the information and to do the screening. And you can आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको इंटरवेंशन प्लान प्रोवाइड हो जाएगा ताकि बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दें. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Dia Elizabeth, ma'am. You are saying that for the wonderful session. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच जोशी मैम कि Thank you. अच्छी तरह से सारी चीज़ें बताने के लिए. आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा एंड जो भी आज के सेशन में जोशी मैम ने बताया आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे. सो आज का सेशन यहीं तक है. आप सभी सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं. बाद में भी कोई डाउट आता है आपके साथ व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर शेयर किया गया. इवन व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको ज्वाइन किया गया, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी. थैंक यू सो मच. आप सभी सेशन को लीड करके डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू.